कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नामिने नामयों विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Prabhupada, Prabhupada, Jayo Srila Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Srila Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna, Prabhuji. Thank Please you, accept Mata. messages. Yeah. Oh, I forgot to give you some like. Okay. Let's see. Oh boy. Okay. So today we have everybody's listening, no problem. All good. Yes, Guru, your voice is clear. Thank you. Adjusting. Okay. Arrogance is an interesting subject matter. Not very nice to speak about arrogance, but we're gonna discuss a little bit the failure of arrogance. So, in the dictionary, the arrogance is defined as the quality of having an exaggerated sense of one's own importance or abilities. Exaggerated sense of self. It creates arrogance. Now, and then there is similar words, they give the meaning and they give similar words. And none of them are good for what we want to accomplish. Haughtiness, conceit, hubris, self-importance, egotism, pomposity, swagger, boasting, and, contempt, immodesty, vanity, pride. So this is all associated, or the words are similar with arrogance. And we don't want to be near of any one of those words or near the process of arrogance. Thank you, Prabhuji. Don't forget, there is the Hindi thing. That's the opening, and you give the gist, and then we go for it. Prabhu, please continue. Yeah. Prabhu, please continue. Okay. So here we understand that this quality of arrogance is the quality that leads one to fall down. You see, that is the first symptom of the process of falling down. प्रभु जी तो Tell ये me. जो क्वालिटी है प्रभु जी अभी बता रहे एरोगेंस की, तो क्या है, इसकी वजह से ना हमारा फ्यूचर में फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है, थोड़े समय के बाद। ठीक है, इसका परिणाम ये है कि हमारा भक्ति से या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से हमारा पतन हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं। So, Srila Prabhupada, in the Bhagavad Gita, 2nd chapter, 2nd verse in the purport, he says, as soon as one becomes proud of his position, he falls down immediately. Okay? तो प्रभुपाद जी भगवद गीता 2.2 में तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे ही किसी को प्राउड फील होता है, कुछ अहंकार या कुछ घमंड होता है, ठीक है, किसी चीज का, तो इमीडिएटली तुरंत उसका पतन हो जाता है तत्काल प्रभाव से, तत्क्षण। The process of falling down is like it's a long, winding road. Sometimes, yes, it happens quite immediately, but most of the time,
the process of falling down is because we are sleeping at the wheel of our devotional service. This expression, sleeping at the wheel, will not attend to our internal disposition towards devotional service. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो पतन हम जिस कारण से होता है ना, वो ऐसे नहीं कि एकदम से होता है ना। कई बार तो एकदम से हो जाता है, लेकिन कई बार क्या है, हम अपने आंतरिक जो हमारा स्वभाव है या फिर हमारे दृष्टिकोण है, कई बार हम उसको नहीं पहचान पाते हैं भक्ति के प्रति। ठीक है, तो कई बार क्या है, उसके कारण भी एक लंबे समय में फिर हमारा वो चीज़ें क्या है, पतन का कारण बनती है। So the history also, there's many examples. People, they were very, how to say, puffed up or arrogant or have a particularly idea of the self-worth in an exaggerated way. And they are Hiranyakashipu, Ravana, Duryodhana. They were all destroyed by pride. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इतिहास में भी इसके काफी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि एरोगेंस के कारण कितने लोगों का पतन हुआ है। जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण था, दुर्योधन था। ठीक है, तो इन सबका पतन जो प्राइड है, पफ्ड अप, यानी कि उनको अपनी शक्तियों का या फिर जो भी चीजें उन्होंने अर्जित की थी उसका उन्हें घमंड हो गया। ठीक है, तो उसी कारण से उनका क्या पतन हुआ। There is a saying in America that they say pride comes before the fall. I think even Prabhupada quote that in some of his books. Pride come before the fall. तो अमेरिका में भी एक कहावत है, ठीक है, कि पतन होने से पहले आपका घमंड पहले आता है ना। जैसे आंधी आती है ना, जैसे कोई पेड़ गिरता है तो उससे पहले आंधी आती है, तो ये वही आंधी है ना, अहंकार की आंधी की। हाँ, आई एम द गॉड, वही वही आंधी है। Yes, गुरु जी। But we're devotees, and we know we're not supposed to be prideful or arrogant. But then we are prideful of our position as a devotee. I'm a better devotee than that person. I am president. I'm in charge of this program. And immediately the process carries on in the devotional realm. तो प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन भक्त होने के नाते, ठीक है, हमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो एक भक्त होने के नाते हमें अपनी जो सेवा है, ठीक है, एक अच्छी सेवा को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी घमंड के। So I remember there was an article, some Bengali reporter in the newspaper. He was saying that, look at that. He was skeptical of the devil, was right in the beginning. What is this Hare Krishna people, the Sahibs? He was saying that some of them are from England. So from the colonial arrogance, conquistadores, they now become the top Vaishnava humility. He was making the comparison from higher arrogance to the lowest humility. They say, how is that possible? Is that true? He was questioning. तो प्रभु जी ने एक बार एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, तो जो पत्रकार थे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, पहले उनको कितना घमंड था अपनी शक्ति का। ठीक है, भारत के ऊपर राज करने का, तो इतने इतने ज्यादा घमंड से अब वो इतने नीचे एकदम विनम्रता के भाव पे आ गए। ठीक है, तो क्या ये सच है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया होता उसने, प्रश्न चिन्ह था, क्या ये सच है कि वहां से यहाँ पे आ गए वो? यस। But the quality of arrogance and the quality of humility, particularly Vaishnava humility, it doesn't belong to a culture or to a place or to a political party or a geographical location. He becomes
from the realization of the personal soul that is meditating and is getting better in his relationship with God. प्रभु जी बता रहे हैं ये जो घमंड है या फिर जो वैष्णव की जो विनम्रता है, ठीक है, ये किसी भी एक जो एक कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है कि सामने वाला जो जीवात्मा है वो किस प्रकार से अभ्यास कर रहा है भक्ति का, किस प्रकार से वो अपना संबंध भगवान के साथ जान पा रहा है, उसके ऊपर कितने अच्छे तरीके से वो मनन कर पा रहा है, उस चीज के ऊपर निर्भर करती है। When Lord Krishna described the Brahminical qualities in the Bhagavad Gita, Samodhamastapasau cham ksantira achavanivacha. So he has tolerance, he has humility, study of the Vedas. This is the future of those who are looking for reestablish the relationship with God. And we have to ask why. तो प्रभु बता रहे हैं कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने ब्राह्मण के कुछ गुण बताए हैं कि ब्राह्मण के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, समो दम तप, ठीक है, शांति राजम एवं। तो ये जो गुण ब्राह्मण के, तो अगर कोई चाहता है कि उसका संबंध अच्छा हो भगवान के साथ, तो वो इन सब चीजों पे वो अभ्यास करता है। The Brahminical quality, it doesn't belong to a birthright, but it belongs to a heart that is striving to realize itself by approaching the bona fide spiritual master and practicing a spiritual practice to reach his relationship with God. This is Brahminical. This is a Brahmana. Before he even teaches, he is realizing himself in this process of God awakening in his heart, Krishna consciousness. तो जो ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये किसी भी जन्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किसका जन्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं कि कौन कितना, उसके अंदर कितनी उत्कंठा है, ठीक है, एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाने की, भगवान के साथ अपना साक्षात्कार करने की, उनके साथ अपना संबंध को जानने की, ठीक है। तो ये उसी उत्कंठा पे निर्भर करता है। So the topic of our discussion today is the failure of arrogance. It's a failure to have arrogance in our heart. If you have failure, we are failing in bhakti. The more arrogance, the less bhakti we have in our heart. It's like equation. The more you have bhakti, the less arrogance you have. Right? Makes sense. Yes. तो प्रभु बता रहे हैं कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ये फेलियर ऑफ एरोगेंस, यानी कि घमंड की असफलता। तो इसका मतलब तो यही है कि यदि हमारे हृदय में ही असफलता रहेगी तो हम भक्ति में सफल किस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जैसे मैथ्स में होती है अपने। तो जितना ज्यादा ये घमंड हमारे हृदय में रहेगा तो उतनी ही कम भक्ति हम कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जितनी ज्यादा हम भक्ति हम करेंगे अच्छे से तो उतना ही कम ये जो घमंड है, ठीक है, ये हमारे हृदय में रहेगा। So the arrogance comes from misunderstanding our constitutional position. We don't see, we don't see ourselves as a servant of the Lord. We see ourselves as masters.
You see, and therefore, there is arrogance in our heart. It's like a cloud that take away our pure stand of devotional service. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो घमंड हमारे हृदय में आता कैसे है, ठीक है। तो ये आता इस वजह से है क्योंकि वैसे तो हम भगवान के दास हैं, ठीक है, लेकिन हम सोचने लगते कि हम दास नहीं, हम क्या, हम स्वामी हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमारे हृदय में आता है, और नहीं आता है तो फिर क्या है, हम भक्ति में सफल नहीं हो पाते। तो प्रभु जी ने बादल का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो जिस प्रकार एक बादल होता है, तो प्रभु जी I forgot the last part, the cloud part. What it was? Arrogance is like that. Forgot about the clouds. That's funny. Arrogance is like dark clouds in the heart of the devotee. A cloud is judgment, you see. Can't see the sun of Bhakti Yoga. And then we're prone to make mistakes, which I'm going to develop now. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी बता रहे हैं ये जो घमंड होता है हमारे हृदय में, जैसे काले बादल होते हैं ना, जब काले बादल, हम सूरज को, जो भक्ति का जो सूरज है उसको हम फिर हम नहीं देख पाते, और उसके कारण क्या, हम तरह तरह की गलतियां या फिर अपराध वो करते रहते हैं, ठीक है। तो इन काले बादलों का छटना जरूरी है, मौसम साफ होना जरूरी है, तभी हम भक्ति के जो प्रकाश है वो हम तक आ पाएगा। So, for a materialistic person who is arrogant, he won't have a very much happy life. He may have friends with other people that are also arrogant, but people, the good natured people, they will keep away from him because it's a kind of vibration they don't want to associate with. And this person, the arrogant man or women, will be, left alone to his own devices, left into his own karma, juice. जो भी बता रहे हैं कि जो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसके अंदर इस प्रकार की घमंड वाली प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उसके साथ कोई भी मिलना जुलना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के जो एक वाइब होती है ना, जैसे, है ना, तो किसी को इस प्रकार का माहौल पसंद नहीं है ना? तो कोई नहीं चाहता How, कि ऐसे व्यक्ति जो कि घमंडी हो तो उसके आस पास हम रहें या उससे हमारी कोई बोलचाल हो, दूर ही रहना चाहते हैं उससे। यस प्रभु जी। plus, a arrogant materialist person is a very ugly person. Personally, I don't feel like being around this person. Not much business to transact. But in the other hand, a devotee that fall praise to arrogance, he may not see, right? He's being arrogant, doesn't even know, feeling superior, feeling some kind of, I know more, I'm more important, I deserve respect. That is a problem because ultimately it leads to offense towards the devotees. And that is a no-no. हरे कृष्ण। या You got that part? तो प्रभु ने बताया है कि यदि हमारे अंदर ये कोई नोट कम्प्लीटली, आई मिस द हीलिंग ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। Is that okay? प्रभु जी could you please repeat it? Yeah. I need repetition प्रभु जी, sorry. You need what? It's a little Repetition, could you much. please repeat it? Yeah, no problem. No problem. I feel that there is a little lagging, because of whatever internet. So, first of all, I was saying Yes, yes. a materialist person that is arrogant is an ugly person. We don't want to associate with this person, and even another materialist person doesn't want to associate with this person.
तो प्रभु जी बता रहे हैं, एक जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि घमंडी होता है, तो उसके साथ एक दूसरा भौतिकवादी व्यक्ति भी उसका संग नहीं करना चाहता है, तो ज्यादा सुंदर नहीं होता है। यस प्रभु जी। So, but then there is a problem of a devotee being arrogant. Because we saw here, he has an exaggerated sense of self. He thinks very much of himself. So these things, self-importance in the heart of devotee, he at one point will commit offense to other devotees. तो लेकिन यदि भक्त के हृदय में इस प्रकार की भावना आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या अपने निजीकरण पे ही केंद्रित हो जाती है कि मैं ही सबसे अच्छी सेवा करता हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, है ना, अपने आप को ही बहुत बड़ा चढ़ा के देखने लगता है। तो उसमें क्या होता है, फिर दूसरे भक्तों के प्रति वो अपराध करेगा, फिर वो हमेशा अपने आप को ही ऊपर दूसरों से अ, ज्यादा महत्वपूर्ण समझेगा। ये पूरी। So Lord Chaitanya, he have the Sishastika, which is 8 prayers, and according to some experts, that's the only thing he actually wrote and left for us. Maybe there is other writings. I quite don't remember now, but these 8 instructions that he left for us. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए केवल लिखित केवल 8 श्लोक है। श्री शेखर हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने हमें यही बताया कि महाप्रभु की लिखित में केवल ये ही हमारे पास निर्देश है शिक्षा अष्टकम के रूप में। यस प्रभु जी। So the first verse of the Shishastika is glorifying the holy name, Chetoda Paramajanam. This is like the rising moon that it's going to shine in the heart of the devotees. I'm paraphrasing here. It glorifying. The third stanza, he's saying, one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, think oneself lower than the straw in the street. This is an interesting prayer and instruction at the same time. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि शिक्षा अष्टकम के जो पहला जो श्लोक है उसमें भगवान ने हरे नाम की महिमा का वर्णन किया है, ठीक है, कि किस प्रकार से हरिनाम हमारे हृदय की जो ये जो आग है ना, उसको शांत करता है, चंद्रमा के जैसे शीतलता प्रदान करता है। दूसरे श्लोक में भी हरिनाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमें हरिनाम किस प्रकार से उसकी शरण लेनी चाहिए, किस प्रकार से जपना चाहिए, है ना? हमेशा हमारा जो है विनम्र दीनता के भाव में होना चाहिए, है ना, कि रास्ते में पड़ी वितरण से भी नीचे हम अपने आप को समझे और दूसरों को भी हम सम्मान दें, चाहे वो सम्मान के योग्य भी ना हो। यस प्रभु जी। So, arrogance covers the bhakti, covers the heart, preventing surrender. How you can surrender and think oneself lower than the straw in the street when you think, well, I'm big as a tree. How are you going to be lower than the straw in the street? So your path to bhakti is blocked. Krishna will not reveal himself to the proud, to the arrogant. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब यदि हमें जो है, ठीक है, हमारे हृदय के ऊपर ये जो घमंड है इसका आवरण यदि रहेगा तो फिर हमारी शरणागति के मार्ग में बाधा आएगी, ठीक है, हम फिर भगवान को शरणागति नहीं कर पाएंगे। और भगवान क्या है, जो इस प्रकार के जो
जो आत्मा है ना, जिसको बहुत ज्यादा घमंड रहता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें तृण के जैसे रहना है, लेकिन जिसके हृदय में ऐसा भावना उत्पन्न हो जाती है, वो समझता है आप तो तृण की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो पेड़ से भी बड़ा हूँ, क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को इतना छोटा समझते हो, है ना? तो जिसके अंदर इस प्रकार की भावना आ जाती है, तो भगवान को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यस प्रभु जी। So the question of arrogance has to do with our particular understand of our constitutional position, that we are Krishnera Nitadas. We are eternally servant of the Lord. You see? So at one point we miss the understanding, think that our position is very important, or important to the point of being better than our fellow devotees, even a fellow man. Some devotees think, I have so much knowledge, I'm better than the karmis. They don't count. We're better. And not just the devotees, many religionists, they think like that. I'm so much knowledge, I'm better than the other people. So there is many pitfalls that can grab the heart of the practitioner of a spiritual life or the devotee, you see, and hide in there and don't let bhakti to grow in the heart. तो भी बता रहे हैं, ये आज का जो विषय है उसमें प्रश्न यहीं से उठता है कि हमें अपनी जो स्वाभाविक स्थिति उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो तभी तो इतना घमंड हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण से हम सोचने लगते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, मेरे पास ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, दूसरे से मैं बेहतर हूँ, ठीक है, तो जब इस प्रकार से ये सब चीजें है ना, जो भक्ति का जो मार्ग है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, और हमारा हृदय घमंड के कारण बहुत हैवी होकर उसके अंदर ही फंस जाता है, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। तो हाँ, तो होना चाहिए कि हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना, कृष्ण नित्य दास, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा स्वरूप है ना, यही हमारी एक स्थिति है, तो इसी को जानने का प्रयास करना चाहिए। यस प्रभु जी। So the idea is we have to recognize arrogance as a subtle enemy. It's a subtle. It's not like walking the street and we see there is meat eating, there is intoxication, there is so many allurements in the street. But arrogance is subtle. It's the winning enemy within. तो हमें है इसको हमने एक अदृश्य यानी जैसे कोई ने बताया सूक्ष्म शत्रु के रूप में देखना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट हमें कहीं रास्ते में बाजार में टकरा जाएगा, घर से बाहर निकले तो मिल गया हमें, आज आप मैं तेरे को देखता हूँ, है ना, कहीं दारू पी So how to तुम्हें दिखेगा, then, सूक्ष्म रूप sorry. में। So now it begs the तो question. ये हमें सूक्ष्म रूप में Hare Krishna. हमारा शत्रु। सॉरी प्रभु जी। यस प्लीज कंटिन्यू। Technical difficulty. I think you finished, but you're not, because it's a little lagging, in the microphone. Okay? ओके। So the thought is Krishna always, arrogance always fails. Humility always succeeds because Krishna is attracted to the heart of the humble devotee. Krishna already told us what his heart is. Okay? It's not a difficult thing to attract the attention of Krishna. But one quality we all should have: humbleness, which is the opposite of arrogance. You see, that is our honesty with Krishna. We're humble. You see, we have our defects, but Krishna sees that and he accepts us in the base of our humility, honesty, and sincerity. And that is all it takes to attract the attention of the Lord. And there's other things also, but this is the beginning
stage. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि बात यह है कि यदि हम भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान का जो आकर्षण है, ठीक है, वो जो विनम्र जो भक्त होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दैन्यता का भाव होता है, उन्हीं के प्रति भगवान हमेशा आकर्षित रहते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर ये जो घमंड वाली जो भावना है, ठीक है, तो उनको भगवान की अट्रैक्शन उनका प्राप्त नहीं हो पाता है। ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान ने बताया, ठीक है, और ये निर्भर करता है कि हम कितनी सिंसियरिटी के साथ कितनी गंभीरता के साथ हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यस प्रभु जी। So remember, the more we glorify ourselves, it's like equation. The more we glorify, that has two sides. The more I glorify, here, man, the more I glorify myself, the less I can glorify Krishna. So the more I glorify Krishna, the less I will glorify myself. It's very simple. So now we're going to see how we're going to be able to be in a state of mind that is free from arrogance. तो प्रभु जी ने बताया है हमें ये देखना होगा कि जितना ज्यादा हम अपना गुणगान करेंगे, जितना ज्यादा हम एक जो अपने अपने आप का गुणगान करेंगे, तो उतना ही कम हम भगवान का गुणगान कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस चीज को कर सकते हैं। So the practical application for a little exercising here in this particular podcast is that first we should recognize arrogance as a subtle enemy. We have to recognize, we have to see it. If we don't see it, it's there, we don't see it. So it's affecting our thoughts, our actions, our relationships, like that. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें न केवल पहचानना है, बल्कि उसको देखना भी है, ठीक है। ये जो घमंड है, इसको अपने एक सूक्ष्म शत्रु के रूप में, ठीक है। और जब ये हम करेंगे तो फिर हमें आगे देखना है कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। वो आज आज का ये जो सत्र है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसको उदाहरण भी हम देंगे कि किस प्रकार से हम इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार की भावना जो हमारे हृदय से खत्म हो जाए। यस प्रभु जी। So we have to practice humility, just like we practice chanting, which is liquid humility, but we have to practice humility in the actions, daily actions. And the best thing to practice this humility is what? I'm asking the devotees of the Lord. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो प्रबंध होता है, ये हमारे सोच को और हमारे जो कार्य होते हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है, विनम्रता का अभ्यास करने का जो भाव है उसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, तो प्रभु जी अभी हम सभी भगवान के भक्तों से पूछ रहे हैं ये अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। Jigesh. Yeah, I think Aishwarya Mataji have something to say. Yes. No, Mataji, no. I'll give you a clue. Vanchakalpa tarubhya cha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. To practice humility, now is asking to confirm my language. Hi, Krishna. This Zoom here is crazy. So we
practice of humility with the Vaishnava Thakur, but serving them, not serving like, yes, also serving like, hand and whatever. But we listen to Vaishnava Thakur because devotees who are more advanced, we listen from them. Devotees that are not so advanced, they just come in the Krishna consciousness. We instruct them with our heart, make them feel welcome. You see, and if you think we're superior, we disregard this, new devotee coming to our area of preaching, then what are we doing? Krishna is saying all this. You see, Krishna is saying in this devotee, is coming to you by the grace of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada, Sri Gurudev. So we should take care of this Vaishnava and impart knowledge to his heart as much as he can have it, with great love and affection, that if he feels welcome. But you cannot do this if we think, well, we're better than this person. I'm better than this person, and I just give something, some prasad, and send him his way. This is not the way of doing a proper preaching. We should take to the heart and take the personal, sincere interest in the person. Everybody has their individual problems. Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि सबसे पहले प्रभु जी ने वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इससे हम देख सकते हैं कि हम वैष्णवों, जो वैष्णव ठाकुर हैं, उनको श्रवण करके, ठीक है, तो उनसे हम सीख सकते हैं, उनकी सेवा करके, ठीक है, ये जो भाव है विनम्रता का, ठीक है, उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। ओके। और हम देखते हैं, हमें देखना चाहिए कि यदि कोई हमसे कोई वरिष्ठ भक्त है, ठीक है, तो हमें उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि कोई हम देखते हैं कि कोई नया भक्त आया है ना, तो यदि कोई नया नया आया है हमारे प्रचार के क्षेत्र में, तो हमें उसको अच्छा फील कराना चाहिए, अच्छा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए, जिससे कि उसको लगे कि हाँ, मेरा यहाँ पे सच में स्वागत है, केवल कहने के लिए नहीं है ना, मैं सही जगह पे आया हूँ, है ना। उसको ऐसा ना लगे कि हम गोला पे आ गए हैं। तो हमको जब वो आया है कोई नया भक्त, तो हम उसको क्या है, कृष्णा भावनामृत का हम उसको ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि खाली प्रसाद हम दे के उसको भगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से एक आत्मा हमारे पास आई है, तो हमें उसकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, सो दैट वो भक्ति में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जिससे हम चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर, उसका विकास होगा हमारे अंदर। यस प्रभु जी। Vaishnava Thakur is gold. Who likes gold? Who likes gold? वैष्णव ठाकुर जो है स्वर्ण है, और स्वर्ण किस चीज को पसंद है? सोना। वैष्णव ठाकुर सोने के समान है। Oh. I see सोना some पसंद नहीं किसी को? hands. अंकित माता जी, सोना नहीं चाहिए क्या आपको? चाहिए। Yay! Why is gold? Because he's the currency by which you can pay your way to the lotus feet of Krishna. He is the one who will, by interacting with Vaishnava Thakur and serving and assisting the Vaishnava, you'll be recognized by Krishna. He's your ticket. He is better than gold. He's crypto gold. Much better. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि तो ये सोना ही क्यों? ठीक है, क्योंकि जो वैष्णव ठाकुर हैं वो एक ऐसी मुद्रा है, ठीक है, कि जिसके द्वारा हम रास्ते में अपने आने वाले विभिन्न आवश्यकताओं का हम पे कर सकते हैं, हम भुगतान कर सकते हैं, ठीक है।
तो और प्रभु जी बता रहे हैं कि सोने से भी बेहतर है, ठीक है, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया क्रिप्टो गोल्ड, है ना, सोने से भी बेहतर है। ओके, क्योंकि यदि हम वैष्णव की सेवा करते हैं, उनका उनको उनका सहयोग करते हैं हम प्रचार करने में, भगवान की सेवा करने में, तो उससे क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर गिरती है। यस प्रभु जी। So, if your family says, or your friends, mainly your friends, said, "What are you doing in the temple? Why are you going there? You waste your time." Say, "No, I'm mining gold. I am a Golanga uh, cryptocurrency. I'm mining gold, like Bitcoin. I'm mining gold." You see, that is what we're doing. And by mining this gold, our arrogance is destroyed. And Krishna recognized us, because I have a nice quote from Prabhupada in this Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 22, chapter 128 verse. Purport. By humility, one attracts the attention of Krishna, and without his attention, no one can succeed. You see, no one can succeed. So it's a beautiful quote for Prabhupada. It's in the purport, 122. And humility is the key. And the humility is practiced with the Vaishnava Thakur, us here. Because there is many things with our interaction is how Krishna judges us. He don't judge us as a person. He judges how we as a person interact with another Vaishnava. That's how Krishna judges us. You see, that's the quality of our devotion, is how we interact with their fellow Vaishnava. तो Too long? तो काफी लंबा बता दिया है। हाँ या तो प्रभु ने बताया हमें कि यदि कोई हमारा परिवारजन है, कोई मित्र हमें बोलते हैं क्या तुम जब देखो तब मंदिर में जाते रहते हो, है ना, क्यों जाते हो मंदिर में इतना, तो हम उनको बता सकते हैं कि जैसा प्रभु ने बताया कि वैष्णव क्या सोने से भी बेहतर है ना, तो हम उनको बता सकते हैं कि मैं सोने की खान में जा रहा हूँ, सोने की खुदाई करने ठीक है, और ये क्या है, गौरंगा क्रिप्टो, ठीक है, तो भगवान तो है ही स्वर्ण की कांति उनकी, है ना, तो उनको हम उनको इस प्रकार से बता सकते हैं। और जब हम उनकी उनके संग में रहकर भी सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बनेंगे हम। और भगवान देखते हैं कि न केवल ये देखते हैं कि हम खुद में कैसा अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि ये देखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया जो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का जो ये श्लोक संख्या पूजन बताई है, तो इसमें बता रहे हैं कि जो वैष्णव का जो गुण है, ठीक है, ये जो विनम्रता ही वैष्णव का गुण है। ओके, ये जो मूड है, मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, ठीक है, ये ही उसकी चाबी है उस खान को खोलने की। ये जो सोने की खान है ना, वो इसी चाबी से खोलेगी कि जितने ज्यादा हम विनम्र हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा हम इस सोने की खुदाई कर पाएंगे, वो अवसर हमें मिलेगा। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस चीज को भगवान देखते हैं पर्सनली, ठीक है, जैसा अभी प्रभु ने बताया था कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी जो वैष्णव हैं उनके साथ हमारा आचरण कैसा है ना, उनके साथ वैष्णवता वाला व्यवहार कर रहे हैं, है ना, वैष्णव सदाचार का हम अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाती हैं और तभी हम पर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है। जय पूरी। Because the idea is, it's hard to be humble if you cannot control your senses, particularly control the mind. And the mind is subjugated by the ego, false ego, arrogance. See? Then it becomes difficult to be humble. Your idea of self-importance. You see? So a measure of sense control has to be there. And you cannot have sense control
If you don't have knowledge, why are you controlling the sense? Why is that necessary? You have to have the knowledge. How you are, our constitutional position, our relationship with Krishna, right? So everything has to be with everything. So it's the process of bhakti yoga. This is the yoga process. This is how we control the sense. We want to reach Krishna. We want to have a state of mind of humbleness. To do that, we need to control our senses. Now, some yogis, they control the senses, so they have some measure of power. See, I control my sense, I got some measure of power, maybe following, maybe some mystic power, and they controlling for that. Few, not very great. But we controlling the senses to reach our destination at the lotus feet of Sri Guru and Gauranga and Krishna. Okay, so Too प्रभु जी long? ने या तो प्रभु जी ने हमें बताया Okay? कि No, too long. Huh? प्रभु Okay, जी, I think sorry. this, yeah, but starting part is very, very interesting, प्रभु जी, how you told Ah, it, mind subjugated by, ah, arrogance. okay. That part is very wonderful, प्रभु जी. तो You, oh, प्रभु जी ने बताया कि हमें इंद्रियों पे संयम करना है. ठीक है, तो इंद्रियों पे संयम करना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो किस प्रकार से ये जो घमंड हमारे हृदय में जो है ना, तो इसने किस प्रकार से हमारे अ, दिमाग को भी काबू कर लिया है. ठीक है, कि हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है. मुझे तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए. जब हमारे पास नॉलेज हो, हम देख पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है. तो जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम उसकी आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो रियली आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग. आई what वॉट is that? Huh? आई थिंक या लास्ट पार्ट बोलिए. आई थिंक दैट इज You रॉन्ग got प्रभु जी. you got it? नो प्रभु जी. Ah, where did you stop? In the starting you told that about sense control and how mind is Hmm. subjugated by the arrogance, and yeah, after that I thought of Yeah, because our goal is to reach Krishna. Other yogis, they do sense control to control the mind and get some personal power, right? You control your sense, you get power. But they're not thinking the lotus feet of Krishna. You see, they don't have the full knowledge. But the devotees, they want humility to be able to receive Krishna in their hearts. How Krishna can come. If there is already a big babu in there, your false ego, how Krishna, the supreme babu, can come? yes प्रभु जी. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो ध्यान योगी होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ शक्तियाँ अर्जित करते हैं. ठीक है, कि जिसके द्वारा वो अ, अपने इंद्रियों पर संयम कर पाए, लेकिन उनके पास ना पूर्ण ज्ञान नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि वो बिना भगवान को ध्यान में रखे हुए ऐसा करते हैं. ठीक है, लेकिन भक्त हैं, भक्तों के पास पूर्ण ज्ञान होता है कि उनका उद्देश्य क्या है. उनका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो. ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि यदि ये जो घमंड रूपी ये जो बाबू हैं, यदि ये हमारे हृदय में रहेंगे, तो फिर भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है वो कैसे हमारे हृदय में आ पाएंगे. तो हमें जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना, अपने हृदय की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, है ना. ये कैसे होगी? वो पूर्ण ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय संयम के द्वारा. यस प्रभु जी. Okay, so या we have a community of devotees in here. We know each other. We know more people outside here, our podcast. So we can train ourselves in the Vaishnava, the gold Vaishnava Thakur. It's gold. So every time you see a Vaishnava, you see, this is gold, you know.
This is my ticket to Krishna. And you serve the Vaishnava. Don't serve hand and foot. You serve, by instructing, by associating, by actually listen to impediments the person may have in Krishna consciousness. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी आई फॉरगॉट द स्टार्टिंग. The cloud is raining today. Vaishnava Thakur is the gold. Yes, Is your ticket. Is Yeah. your ticket to Krishna. Yes, that's it प्रभु जी. तो प्रभु जी ने बताया कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव ठाकुर, तो हमारे लिए क्या है कि गोलोक धाम जाने की क्या एक टिकट है. ओके, तो जब भी हम किसी वैष्णव को देखते हैं तो हमें इसी भाव से देखना चाहिए कि हाँ, एक वैष्णव के माध्यम से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं. ठीक है, भगवत धाम जाने का जो टिकट है हमें मिल सकता है वैष्णव की सेवा करने से. ठीक है, उनको श्रवण करने से. ठीक है, उनका संग करने से. ओके, तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा भक्तों का संग है. ठीक है, ये जो अपना ग्रुप है फ्रेंड्स टीच, तो यहाँ पे भी और बाहर भी हम इस चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं. भगवान ने बहुत ही सुंदर फैसिलिटी हमें दी है. ओके, तो हम इस चीज़ का अभ्यास करें और विनम्रता के भाव के साथ फिर हम देखें कि हमारे अंदर कैसे जो प्रकाश है भक्ति का वो किस प्रकार से आ रहा है, वो हमें फील होगा. यस प्रभु जी. So, today I was thinking there is actually three things that everybody's concerned. People, materialistic, sometimes a little bit of devotees, and that is financial, that's in their life, financial, even horoscope, they go into three aspects, maybe more also, but financial, relationship, and health. Health. Okay. There's a fourth one. This is our fourth one is Atma Jnanam. This is knowledge about the Supreme Personality of God. This is our fourth department. Most of the people, they're not interested in the fourth part. They come and they have this, no, they have this, the finances, their well health, their relationships. This get them. So we as devotees should be expert to guide people in these three aspects of life so they can come to the fourth aspect, the inquiry, Brahma Jnanam, inquire about the Supreme Personality of God and practice Krishna consciousness. You see, we don't have to be a finance expert or a doctor or, a super, counselor for, relationships. We just give common sense, advice from Prabhupada's books, and you bring them to Krishna consciousness. तो प्रभु ने बताया है कि आजकल जो ये ये चीज देखने में आती है कि आजकल जो लोग हैं, इवन जो भक्त भी हैं, वो इन तीन चीजों के पीछे ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, या फिर इन चीजों के बारे में ही, तीन चीजों के बारे में ही ज्यादा उनको जिज्ञासा रहती है ना. चाहे वो किसी ज्योतिष के पास जाए तब भी, है ना. तो पहले तो हो गया अपना जो पैसा है ना, पैसे के बारे में. दूसरा अपने संबंध के बारे में. तीसरा हो गया अपने स्वास्थ्य के बारे में. तो इन चीज़ों के बारे में ही हम ज़्यादा इच्छुक रहते हैं ना, या फिर ज़्यादा हमारा दिलचस्पी रहती है इन सब मामलों में. लेकिन एक चौथा जो पहलू है वो ये है कि आत्मा का ज्ञान, ना, आत्मज्ञान. ओके, तो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना. तो हमें लोगों को गाइड करना चाहिए प्रभुपाद जी के बुक्स के माध्यम से. ठीक है, कि इन तीन चीजों के अलावा भी और भी एक चौथा बारे में हम जान सकते हैं, और वो है
कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये जो विज्ञान है इसके बारे में हम उनको गाइड कर सकते हैं प्रभुपाद जी के बुक्स के माध्यम से। ओके, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में जो जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि हम भगवान के बारे में जानें। Okay, यस प्रभु जी। so we're gonna pass the time a little bit. We take few questions now, and my best ability, I try to interact with the answer. But हाँ, you understand how the importance of self-awareness. This is our meditation. Devotees, they're self-aware. Why do they do the things they do? You know, what are the reasons? Sometimes people say, "Oh, I did something. I don't know why I did this." Devotees, they shouldn't be like that anytime. We should know why we do certain things. Okay, and we meditate in our internal mental state, and that is our cultivation. That is our devotional service. We're getting better for Krishna, for serving Gurudev. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम समय हो गया है कुछ प्रश्न उत्तर का। यदि आपके कुछ प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, तो प्रभु जी पूरा प्रयास करेंगे उनको अच्छे से समझाने का। और प्रभु जी ने जो भी बताया है कि दिमाग से निकल गया, आगे पता नहीं क्या हो रहा है। यस प्रभु जी, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज Okay, आप प्रभु जी से पूछ सकते so हैं। to be humble is not to be like weak. Actually, is a great strength. Humbleness is a great strength because that is the sign of a person in knowledge, that he understands his position in the world. When you see the world as it is and all the beautiful things that the Lord created, this beautiful world, we become very humble. You see? And this is a sign of strength. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि यदि कोई विनम्र है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको उसकी कमजोरी समझा जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको ज्ञान है, ठीक है, इसीलिए वो विनम्रता का आचरण कर रहा है वो, ठीक है। तो यदि हमारे अंदर इस प्रकार का स्वभाव नहीं है तो फिर भगवान कुछ ऐसी परिस्थितियां देंगे कि जिससे कि हमारे अंदर ये भाव का विकास हो। यस प्रभु जी। So we can have some questions now. And I just want to share with you today, me and my wife, we distribute 15 plates of prasad. You know, she got up in the morning. She decided I'm going to do it. Last week, she did 7. This time we did 15. Mi goreng, that's a Malaysian plate, which actually is very delicious. And we have some people here, the humble workers, you know, the Bangladesh. There's a lot of Bangladesh working here in Malaysia. And they do many works, like here, there's the car wash, you know, and the petrol pump station. Most of them, they're Bengalis. So we go there with a nice plate, you know, and they're very grateful, nice people. So we are doing this. We start this prasad distribution. My wife want to do it. I follow. And now we're going to improve. Next week, we're going to give the prasadam with a book, a small book, Tamilian book. You know, they have the small Tamilian books in here. They speak Tamil. So in this way, we're going to expand a little bit the situation. And I want to hear from you all to do your service, to this humble service. You know, Prabhupada used to cook for the devotees. No, they eat prasadam cooked by Prabhupada. That's how they start this movement.
So let's see the glorious distribution books. Every week I'm gonna tell about the distribution books. We all should work together. I have an account in BBT. I send books. I'm thinking, how to do this. You can order a box of books and you can distribute. It's a beautiful activity because I can tell one thing. Somewhere in the circle of friends in the city, someone is walking around praying and looking for exactly what you have, which is this transcendental knowledge, this process of Krishna consciousness. They're looking for it. They're waiting for you to contact, to give that connection. All of you. Okay? You have to have firm faith in that. There is somebody walking. Tomorrow you go on the street to look. Is this guy? Is that guy? Is that Mataji? Who is there? Who is looking for what you have? This wonderful process of Krishna consciousness. Sorry, Prabhu. या तो प्रभु जी ने बताया कि आज ना प्रभु जी ने और माता जी ने मिलके आज प्रसादम वितरण किया है। 15 प्लेट प्रसाद की प्रभु जी ने और माता जी ने मिलके किए। तो पिछले संडे को प्रभु जी ने 7 प्लेट का किया था, अब की बार 15 का। तो आने वाले समय में और ज्यादा करेंगे और नेक्स्ट टाइम से प्रभु जी का ये विचार है कि एक छोटी बुक भी साथ में दी जाए। ओके, और प्रभु जी हमसे भी अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये प्रभुपाद जी ने प्रसादम के माध्यम से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, कि प्रभुपाद जी स्वयं कितने सारे भक्तों के लिए स्वयं प्रसादम बनाते थे, ये हमने देखा है, पढ़ा भी है। ठीक है, लगभग 200 भक्त के लिए प्रभुपाद जी स्वयं प्रसाद बनाते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और करना चाहिए हमें। और प्रभु जी जैसे हर क्लास में बताते हैं कि प्रभु जी का बीबीटी में अकाउंट है और हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हम प्रभु जी से कॉन्टेक्ट करके हम एक बुक की जो पेटी है, कार्टन है, वो अपने घर पे हम मंगा सकते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तो होगा कि जिस कोई से ज्ञान की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं जिज्ञासा कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको भगवान तक कनेक्ट होने का माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी हर सप्ताह हम चीज के बारे में बताते हैं, तो इसी के बारे में आई थिंक थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। प्रभु जी, तो किसी कोई जिज्ञासा अपने So, हृदय के अंदर छिपी हुई है। Gyasa. We have questions because questions, my mother used to say, the worst question is the one you don't ask. So, fire away. We take few questions before we'll finish this program this Sunday. Thank you very much for you to come. Very good regulars in there. I appreciate your endeavor. I really do. I pray for you all. Please, Krishna, give some mercy to all of us. Make us distribute books. Please, Lord, please. Distribute books. Okay, fire away. तो Questions. प्रभु You जी must have. बता रहे हैं, Yeah. हाँ सॉरी प्रभु जी, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी की माता जी बोलते हैं कि सबसे जो क्या बोलते हैं उसको बेकार जो प्रश्न वो यही कि जिसको हम नहीं पूछते हैं, यानी तो हमें पूछना चाहिए। यदि हृदय के अंदर कोई भी प्रश्न है तो उसको प्रभु जी से पूछ लीजिए दिल खोल के। शर्माना नहीं है कि मैं क्या पूछूंगा या क्या मैं क्या पूछूंगी, कोई क्या सोचेगा, है ना। जरूर प्रभु से, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार मिलेगा या बाकी जो डिवोटीज हैं। ठीक है, तो और प्रभु जी हम सबको बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं कि सभी डिवोटी बहुत ही ज़्यादा नियमित रूप से प्रभु जी की क्लास में आते हैं। तो उसके लिए प्रभु जी ने अपनी कृपा से हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना की है। ठीक है, तो उसके लिए प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इज द टाइम फॉर योर क्वेश्चन। यस, हु इज द फर्स्ट वन टू ब्रेक द आइस? Okay. While you think about the question,
I want to ask you all, if you would order some books, would it be in Hindi, Bengali, or English, or a combination? Prabhuji, I want to ask one thing about this book distribution. Tell me. Now, are the books sponsored, or do we have to purchase it? Okay. I see there is a little bit of a question in there. It would be nice if it could be purchased. Okay. They don't cost too much, because once you sell the book, you get your money back. Plus, Yes. there is an extra money left you can use for your preaching activities. Okay? Now, I'm thinking in making a package, maybe one Bhagavad Gita, 10 small books, 1 million book, like teaching Lord Chaitanya, so make a package like that and send to each one of you. Let's see how much this thing costs. I will finance. And then, like Prabhupada used to do, Prabhupada used to finance the books that they pay back Prabhupada. But they don't pay back me, they pay back one account that we set up, and we work with this account. How does that sound? Good? Yes, प्रभु जी बताइए कैसा लग रहा है प्रभु जी का ऑफर ये Yes, Yeah. Prabhuji, it's nice. Okay, Neha. Was you, Neha? Yes, yes. Okay. So, yeah, it should be on me, right? I should take the leadership and put my money where my mouth is. And then we will see how we go from there. Because it's a nice thing. I distribute one Bhagavad Gita in Chinese. I was so happy. My Felix is my friend, my Haribo friend. So I'll work it out this, okay? And then we'll go from there. Yes, Now, all of you are in India, unless Saurav. Saurav is here? No, huh? No, Prabhuji, sorry. Prabhuji's not it. Okay. And you tell me, most of you would like to have Hindi books, right? Hindi Bhagavad Gita, Hindi small books like that, right? right. Anybody Yes. for Bengali? अंतारा माता जी तनुश्री माता जी Okay. ऐश्वर्या माता So, जी okay. I will have like 3 Bengali sets, or well, 5 Hindi sets. So 1 Bhagavad Gita, 10 small books, 1 middle book. Is that okay? yeah 10 plus Okay. Let's see how this goes. Anybody has a question now? Yes, Okay. Prabhuji, I have a question. Yes. नेहा माता जी Who Hare is Krishna. that? Neha? Prabhuji, Mataji Neha. Neha? Yes, Yes. please. So, Prabhuji, when we are starting, we are in a starting phase of bhakti, so we do so much offenses. Like today only I did an offense. I plucked tulsi leaf, but today was Sunday, so it is not like advised to pluck tulsi leaf in Sunday. So I'm feeling very guilty, and because of that guilt, I am not able to do my rounds. Like I'm doing rounds, and I'm feeling very guilty. I'm feeling. Oh, such a horrible thing. Who told you you cannot pick Tulsi Pata on Sunday? Prabhuji, I have ISKCON Desire Tree is a website, na, so I have searched it. So There was it an is, article in there. yes. Is a Shastric injunction, or is just Tulsi takes rest on Sunday? How is that? Maybe they are telling that Tulsi fasts on Sundays. Okay. तुलसी महारानी स्कूल में नहीं जाती हैं कि संडे को उनकी छुट्टी है ठीक है Shruti. Prabhuji, I have read it on ISKCON Desire Tree only. Na? No, you're doing the right thing. You're coming and you're discussing here. Because remember, I said there's 5 sampradayas, There is Sri, Shiva, there is the Brahma Sampradaya,
There is another one I can remember, and there is the internet sampradaya. So this, why did you plug Tulsi anyway? To offer my deities the Okay. So how that can be offense if you plug the Tulsi to offer to your deities, then it's your deity's fault. Let she talk to Krishna and see what Krishna is gonna say. You're just the messenger. You're doing service. You cannot be upset by this. There's other things you should get upset. Not this. Yeah. We Prabhuji, I plug Tulsi, so I live in hostel na, so all girls were like, okay, why did you plug Tulsi? Like today, Sunday is not the day you plug Tulsi. So all are criticizing me. okay. Well, you should expect criticism anyway, because they're looking at you, right? They look everything you do. The thing is, you have to be smart. You have to tell, well, Krishna is not taking rest on Sunday, so I have to offer, a Tulsi Pata. If you really want to do something about it, then Saturday you can get extra pata, and then Sunday you have extra pata to offer the Lord. Or Sunday is okay. I don't think there is a shastric injunction saying that you cannot pick Sunday, because Sunday is a Gregorian calendar thing. It's not even what you call. It's not like a Vaishnava calendar. You understand? Okay, It's okay, uh, it's a it's a Christian calendar. So it's okay because you're doing for service, and for service you can do. But if it's not for service, you shouldn't pick any day of the week. You see, that makes sense? Yeah. thank you. Don't get too caught up in this particular, little technicalities. Focus on your devotion, in your chanting. Okay. And Tulsi, she's broad-minded and she's very merciful to take any offense like this. Because I don't think she's resting Sunday. She takes Shruti. She's always ready to serve Krishna. My personal opinion. Okay. So become very peaceful. Don't worry about it. Okay. Okay, Prabhuji. And what about other offenses like we feel guilty? Well, you feel guilty because you feel you did something wrong. But now I'm telling you, we didn't do anything wrong. Now the guilty should go away unless you like to be feeling guilty because you feel very, I like to suffer. So you should just let that go because there's no guilty party, you know. It's just a lead from Tulsi that you took to serve Krishna, and you completely authorized to do that. Unless there is in the future, we see there is like a shastric injunction. You cannot pick Sunday. And why Sunday? Because it's a Gregorian calendar, it's a Christian calendar thing. You see, so I hardly doubt I doubt that this is actually a shastric injunction. Because devotees now they make up things they see this guy doing, and then I see the other guy doing, and this thing of rules and regulations have to be very careful. Okay, we have to be very careful. Okay, So Prabhuji. Thank you so much. you should not feel guilty. You should feel very ecstatic. You're serving. What kind of deities you have? Prabhuji, Radha Madhav. Ah, very good. You have in your hostel? Sorry, Prabhuji, I didn't Wh- hear you. wh- Where do you have the deities? Where do you have? Prabhuji, in my room, I live in a hostel, na, so I have a table for the ladies. You live in the hostel. Do you have other girls with you in there? In the same room? Yes, Yeah? Prabhuji. How many? One more is there, my roommate. And she's the one complaining. Not her, but other girls, because The Tulsi girl. is like in the rooftop. So, You went there to pick, they saw uh, it. Ah, okay.
You just be smart and said, say something that don't let they get in your case. You tell them, come and see. I'm offering to Radhamadva. How can I leave them without Tulsi Devi? Be very humble about it, and they'll let you go. Give them some prashadam. Who else has a deity in the dormitory or in the what's that? The dorm? What do you call the? Who else has a deity? Banu, what is the deity you have? Huh? Only photo, Maharaj. You have photo, huh? Photo. Yes, Maharaj. What photo you have? Radha Mother. Radha Damodar. Radha Damodar. Very good. You do puja to the photo also? Yes, Maharaj. Sometime after Tulsi leaves and flowers. Very good. You're happy, huh? Very good. What about Ankita Mata? Do you have deities? Hare Krishna Prabhuji, Pranam. Yes, Prabhuji, I have little Jagannath which my senior brought it from Jagannath Puri. What deity you have is in here. I have Jagannath ji. Jagannath deities. Jagannath, like Yes. this one. Okay. Aishwarya, tell me about your deity. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. I have small Laddu Gopal and other I have photos of Radha Madhav, Panchatattva, Gaurnitai, and I have Shri Ram, Hanumanji, Yashod. I have many photos basically. You got everybody, huh? Where do you keep them? In your house or in your hostel in the school? I'm in home only, so I have a self, and yeah, in the self I keep. And when your parents see your colleagues, your gang, what do they say? Actually, it's in little. Matlab, my parents do also worship them, but there is like two set, and the above self is used for keeping all Krishna deities and other, and the down for other demigods because we both are there, and we need to keep. My mom needs to also keep her, and I also need to keep Krishna. So we have made levels. The first level is for Krishna, and the second level is for the demigods. What demigod you have in there? Like Lakshmi Devi, Saraswati Devi, Durga Devi. They great Vaishnavas, and Lakshmi Devi is always massaging the feet of the Lord. So it's good for you. So happy. So which one, you just do a picture or you do Krishna also? The whole thing. The whole thing. That's good. Good for you. What about you, Gora? I have photos only yet. Okay. It's good. It's good. I have Jagannath in here and I have Gaurnita in my house in Mayapur. There's a whole story in that deity. One day I'll tell all of you. It's a beautiful deity. So, okay. Everybody has the Shakti behind. So you keep chanting, you keep doing, the good work. I'm gonna see about these books, and then I'll send each one of you. I'll send a box, with the books, and then you're gonna go attempt. Let's make an experiment, right? And see how it works. And Krishna will bless you all, and you'll be in the fire of Sankirtan, and then we go from there. That is extended part of Neha Mataji's question. I have also heard it that we cannot pick Tulsi leaf on Dwadashi. So is that correct or not, Prabhuji? Okay, in Dwadasi. I tell you what, it should be some just shastric injunction, okay? Because I don't have the shastric injunction. I cannot say one way or the other. So maybe we can do a little research. I put my Mataji to work on this because she dealt with that before. There was some issue with this.
not on Sunday, but the Dwadasi thing. Yeah. And we'll go, find out that maybe next week we will give some information. The thing is, we are not very with the, very strict on these things. Okay, we should always focus in the service, the importance of service. Now we have to be intelligent. If you cannot offer Dwadas, for example, or Sunday, then Saturday or the day before Ekadasi or the 10th day, you collect enough Tulsi leaves so you can offer Ekadasi, you can offer Dwadasi. We have to be smart. Just like, for example, Prabhupada did that. He is not a rule, but he won't travel Thursday. Thursday is not very good for traveling. So some devotees, they have an airplane, they have to travel Thursday. So what do? That's intelligence start to work. So what do? They pack a suitcase. And they leave day before night. They leave outside the door. So the suitcase already is going. So he left the day before Thursday. That is a technicality. So it will be okay to travel Thursday. So that is a technical thing. You see? So there's many ways you can go, not around, but it's not a cheat code or anything, but you can, go around these injunctions so you can do happily your devotional service. Dadami Bhuti Yogantam, Krishna give you the intelligence to do all these things. If that bothers you, Neha, you just make sure you collect enough Tulsi Saturday, so Sunday, Krishna can have all his Tulsi leaves. Okay? Prabhuji, I am seeing the article it's there in Hari Bhakti Vilas 7.353 mandates, I guess. It's written there ki it is generally forbidden to pluck tulsi on Sankranti, Purnima, Amavasya, Dwadasi, Sunday according to the strict rule of the Smritis. But the most important rule according to Srila Sanatan Goswami, which is the Vaishnava devotee, should certainly follow to not pluck tulsi leaves on Dwadashi. But Sunday is okay, right? According to that book. Yeah, matlab, it is generally forbidden, but the strict rule is not to pluck on Dwadashi. Okay. Yeah, my wife, I remember telling that about the discussion before. So just be smart. In the Ekadasi, you get the Tulsi one, and Dwadasi you have your leaves in there for you. Okay. How are you gonna offer your prasadam? You just have to be a little smart with this, no problem. We should not give too much trouble to Tulsi Devi. Yes, Prabhuji. Okay, thank you. Thank you so much, Prabhuji. You went to the fifth sampradaya, huh? It's okay. So I see you next Sunday or next